Hello friends, in this today's video lecture we are going to study about air pressure, or we can say atmospheric pressure. As we already know that pressure can be defined as force acting per unit area. So we can say that atmospheric pressure or air pressure can be defined as air mass acting on the surface per unit area. So here we can see the derivation. Air pressure or atmospheric pressure is equal to force applied by the air masses upon area, where F is the force exerted by the air mass and A is the area on which force act. Now let us the definition of the atmospheric pressure. Force exerted per unit area on the Earth's surface is known as air pressure or atmospheric pressure. Simply atmospheric pressure. It is measured in millibars and pascal, or we can say the units for measuring the atmospheric pressure is millibar and pascal. It is measured by the instrument known as barometer, which was discovered by Torricelli. So let us see what happens when there is a difference in the air pressures. Let us assume the two locations, one having the atmospheric pressure that is 80 millibar and another location has 90 mb millibar pressure. So the difference between these two locations will lead to the movement of the air from the high pressure to low pressure. So the movement of the wind from the 90 millibar will be towards 80 millibar pressure. This pressure difference is known as pressure gradient, and due to this force originate is known as pressure gradient force. This we will look by our diagram. So here we can see that the high pressure area, the moment of the wind is towards the low pressure area, and the force acting between them is PGF force, that is pressure gradient force. Atmospheric pressure can be studied in two terms: vertical distribution of atmospheric pressure and the horizontal distribution of atmospheric pressure. Now we will study about the vertical distribution of atmospheric pressure. As we know that air is a mixture of various gases, it is highly compressible. As it compresses, its density increases. The higher the density of air, the greater is the air pressure and vice versa. जैसे जैसे एयर की डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, और जैसे हम धरती के निकट पे होते हैं तो वहाँ पे धरती का प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो धरती का प्रेशर कम होने लगता है. The mass of the air above in the column of air compresses the air under it. Hence, its lower layer are more dense than the upper layers. जो ऊपर की लेयर्स हैं वो नीचे की लेयर्स को दबाती हैं, जिसकी वजह से नीचे की लेयर्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है as compared to the upper layers. As a result, the lower layers of the atmosphere have the higher density, hence exert more pressure. Lower layers पे जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है due to the mass of upper layers. Conversely, the higher layers are less compressed and hence they have low density and low pressure. जो ऊपर की layers हैं उनके ऊपर कम प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे लो डेंसिटी होती है, and as a result there is a low pressure also. The columnar distribution of atmospheric pressure is known as vertical distribution of pressure. जब हम कॉलमनार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसी को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर करते हैं. जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाने लगते हैं वही हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है. एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड बट इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट. जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द अपर लेयर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द लोअर लेयर्स. जो ऊपर की लेयर्स हैं उन नीचे की लेयर्स पे दबाव लगाती हैं, इसलिए जब जैसे ही हम ऊपर बढ़ने लगते हैं तो जो हमारा प्रेशर है वो कम होने लगता है. बट जो रेट है एयर प्रेशर डिक्रीज का वो सेम नहीं रहता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है.
Dense component of atmosphere are found in its lower parts near the mean sea level. जो हमारे डेंस कंपोनेंट हैं एटमॉस्फेयर के, वे लोअर लेयर्स या लोअर पार्ट्स में पाए जाते हैं, ज़्यादातर मीन सी लेवल के पास में. टेम्परेचर ऑफ द एयर, अमाउंट of water vapor present in the air, and the gravitational pull of the earth determine the air pressure of a given place and at a given time. जो एक प्लेस का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे उपस्थित जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर वेपर है एयर में, और जो वहाँ का ग्रेविटेशनल पुल है, दे ऑल दीज फैक्टर डिटरमाइन द प्रेशर एट दैट गिवन टाइम. अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर राइज अप करेगी, इसकी वजह से वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. एंड अगर जो वहाँ पे वाटर वेपर है तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. एंड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एयर है वो इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, सो द प्रेशर विल इंक्रीज. द नॉर्मल रेट ऑफ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर इज 34 millibar per every 300 meters increase in altitude. The effect of the low pressure are more clearly experienced by the people living in the hilly areas as compared to those who live in plain. जो प्रेशर का एक्सपीरियंस है वो हिल पे जो रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा होता है as compared to the people who lives in the plain. In the high mountainous areas, rice takes more time to cook because low pressure reduce the boiling point of the water. जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे जब हम चावल को पकाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है. इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम सच एज फेंटनेस एंड नोज ब्लीडिंग आर ऑल्सो फेस्ड बाय मेनी ट्रैकर्स फ्रॉम आउटसाइड इन सच एरियाज बिकॉज ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस इन विच द एयर इज थिन एंड इट हैज़ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगते हैं या ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ पे जब हम अल्टीट्यूड की एरियाज पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और डेंसिटी ऑफ द एयर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फेंटनेस या नोज ब्लीडिंग होती है, चक्कर आना या नोज ब्लीडिंग के. दिस वाज आवर वीडियो अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. If you want more such educational content from me, please subscribe my channel. See you in the next. Thank you and have a nice day.